Hello students, today I am here to discuss a very important property of statistics, effect of origin and scale. Origin means I am either going to have subtraction or addition. Scale means either we have division or multiplication. Students, this property is applicable only for a linear equation where y is equal to a plus bx. A and b are constants, x and y are variables. So if I am going to change the origin, it will be by the constant a. If there is a change in scale, it will be by the constant b. To move on, we have measures of central tendency, mean, median and mode. All these three methods gets affected due to change of origin as well as scale. If I have variables x and y, after changing their origin and scale, x and y will become mean of x and mean of y, median of x and median of y, mode of x and mode of y. Next, we have measures of dispersion, range, quartile deviation, standard deviation and mean deviation. Students, these measures of dispersion remains unaffected for change of origin and gets affected due to change of scale. Means A के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट B के चेंज होने से फर्क पड़ेगा. तो मेरे पास if y is equal to a plus bx है, given the range of x, range of y equals to b modulus into range of x. Modulus means all values are positive. Qy equals to b modulus into qx. Mean deviation of y equals to b modulus into mean deviation of x. Quartile deviation of x is equal to y equals to b modulus into quartile deviation of x. To move on to the third method, that is correlation. In correlation, note down measures of coefficient of correlation remains unaffected due to change of origin and scale. अगर मेरा आर एक्स वाई 0.25 आ रहा है तो x और y ओरिजिन को और स्केल को चेंज करने के बाद 0.25 ही रहेगा. द वैल्यू विल नॉट चेंज. व्हाट विल चेंज? देयर विल बी अ चेंज इन साइन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. और ये साइन किसके ऊपर डिपेंड करता है? दिस साइन डिपेंड्स अपॉन द साइंस ऑफ स्केल्स. बी जो है वो मेरा स्केल है तो उसके साइन के ऊपर डिपेंड करता है. अगर मेरे दोनों साइंस स्केल्स के सेम हैं, प्लस एंड प्लस, तो मेरा आर एक्स वाई जो कि चेंज होके आर यू वी बन जाएगा. इट विल रिमेन सेम इन साइन ऑल्सो. बट अगर मेरे साइन स्केल्स के ऑपोजिट आए हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो मेरा आर एक्स वाई विल बी इक्वल टू आर यू वी बट विद द चेंज ऑफ साइन. प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा. आई एम रिपीटिंग, coefficient of correlation after changing its origin and scale, the value will remain same, only there will be a change in sign of scales depending upon the size of scales. If positive, it will change. If same, they will remain as it is. Last but not the least, it is regression. Students, listen carefully. Regression will remain unaffected due to change of origin, but it will get affected due to change of scale. जब मैंने उसका स्केल चेंज कर दिया और मेरी वैल्यूज जो हैं, मेरे वेरिएबल्स x एंड y, वो क्या बन जाएंगे? u एंड v. मेरे पास दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं, bxy एंड byx. So after changing my scale, bxy will become buv and byx will become bvu. I hope this information will be helpful for you all for your upcoming December exam. All the best. Thank you. I hope it is clear. Thank you. All the best.